Hello students, welcome back to TMI's home-based education. As in the last video we had started with chapter number 2, and in that we had understand that what is natural number and what is whole number. Again I will revise it. Natural number means the counting number which starts from 1, 2, 3 and it goes on are called natural numbers, and the smallest natural number is 1. Whole number means when the counting number starts from 0, 1, 2, 3 and it goes on are called whole numbers, and the smallest whole number is 0. और एक चीज़ मैंने आपको सिखाई थी that all natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural number, and the reason also I had given you, that was because of 0. Okay, so let us move further in this chapter, and we had finished till question number 6 in exercise 2.1. Now we'll continue from question number 7. So in your textbook on page number 31 it is being given that in each of the following pairs of numbers state which whole number is on the left of the other number on the number line. Also write them with the appropriate sign greater than, less than, between them. तो हमें लिखना है कि ये जो नंबर्स दिए, दो नंबर्स दिए, उसमें से कौन सा नंबर किसके लेफ्ट में आएगा, दैट वी हैव टू राइट डाउन, एंड देन वी हैव टू पुट द अप्रोप्रिएट साइन विच विल बी पॉसिबल फॉर इट. तो 530 and 503, these two numbers are being given. Now number line means एक लाइन ड्रॉ किया है. Okay, one line is being drawn. You no need to draw, just I am giving an example. हम उस पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6. तो as we'll go on writing, the first will come what, 503. ये दोनों में से पहले कौन आएगा, 503, and then it will go on and then it will come 530. तो कौन सा नंबर किसके लेफ्ट में है, that we have to write down. ओके, तो पहले कौन आ रहा है, 503, और 503 के बाद क्या आएगा, 530. सो व्हाट वी विल राइट, as we have to write down, so we'll write 503 is on the left of 530. हो गया ना, बिकॉज जो पहले आएगा दैट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अनदर नंबर, क्योंकि 503 के बाद आगे जाके वो 530 आएगा. सो वी विल राइट दैट 503 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 530, मतलब 530 के लेफ्ट साइड में कौन है, 503, एंड देन वी हैव टू पुट द साइन ऑल्सो. सो व्हाट साइन वी कैन पुट, 503 530. so who is greater here, 530 is being greater, so we'll open the mouth of the sign towards 530. so this is how we have to do. The second one, it is 370 and 307. again same like this, पहले 370 दिया है, फिर 307, लेकिन एक्चुअल में पहले कौन सा नंबर आएगा, पहले जो नंबर आएगा दैट विल बी 307, एंड देन व्हेन यू विल मूव फॉरवर्ड ग्रेजुअली देन इट विल कम टू 370. सो व्हाट वी विल राइट हियर, दैट 307 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 370. 307 जो है वो 370 के लेफ्ट साइड में है, एंड देन वी हैव टू पुट द साइन ऑल्सो. सो वी विल पुट द साइन 307 and 370. so 370 is greater, so we'll open the sign. so same way you have to do question numbers in that C and D. जो छोटा है वो हमेशा लेफ्ट में होगा, जो बड़ा है वो हमेशा राइट में होगा. सो जो छोटा है, like here it is 98,765, here it is 56,789. तो ये 98,000 है, ये 56,000 है, तो पहले 56,000 ही आएगा. so what you will write, that 56,789 is on the left of 98,765. the same way you will do it here also, and then put the sign as we have done here. Okay, so it's easy, nothing hard is being there.
Now the last question which is remaining, that is of question number 8, where we have to write down true and false. सो जो मैंने आपको पहले नेचुरल नंबर एंड होल नंबर के रिलेटेड जो भी सीखा है, इफ़ यू आर नोइंग दैट थिंग, देन दिस क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इजी. सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट वन, इट इज गिवन दैट जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. मैंने आपको डेफिनेशन के टाइम पे भी लिखाया था कि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर 1 2 3 4 5 एंड इट गोज ऑन. इसीलिए स्टार्टिंग 1 से हो रहा है तो लास्ट स्मॉलेस्ट नंबर विल बी ऑल्सो 1. बट हियर इट इज गिवन फॉर दैट जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर में तो जीरो से कहीं पे स्टार्ट होता ही नहीं है. सो हाउ इट कैन बी अ नेचुरल नंबर? सो योर फर्स्ट आंसर इज false. Okay, you have to write down the question and then you will write down false. पूरा false और true का पूरा spelling लिखना है, खाली F40 नहीं लिखना है. As I am not writing in the fair book, just for the explanation, that's why I am writing like this. Okay, now second one, here it is. 400 is the predecessor of 399. मतलब 400 है वो 399 का प्रीडिसेसर है. अभी प्रीडिसेसर भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. प्रीडिसेसर मीन्स -1 एंड सक्सेसर मीन्स +1. तो 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399. मतलब 399 का जो प्रीडिसेसर होगा वो क्या होना चाहिए? 398 होना चाहिए. बट as here it is given 400, so it means again the statement goes false. अगर यहाँ पे ऐसे दिया होता that 400 is the successor of 399, then the statement would be true. But here it is given that 400 is the predecessor of 399. 399 का predecessor 400 है, तो वो कैसे हो सकता है? 399 में से 1 माइनस करेंगे तो it will be 398. So that's why the statement is wrong. Now the next one, 0 is the smallest whole number. 0 is the smallest whole number. यहाँ पे हमने क्या किया था? 0 is the smallest natural number. We had done false because the smallest natural number is 1. But here it is given that 0 is the smallest whole number. Then the statement goes true. क्योंकि whole number start कहाँ से होता है? From 0, 1 2 3 and then it goes on. That's why 0 is the smallest whole number. Now let us move to D. 600 is the successor of 599. मीन्स 599 का जो सक्सेसर है दैट इज 600. 599 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 600. सो द स्टेटमेंट गोज ट्रू. ओके, देन E, all natural numbers are whole numbers. Okay, so all natural numbers are whole numbers. That also I had made you to write in the definition that all natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural numbers. So again, fifth one was true. The next statement is given, all whole numbers are natural number. देखो मैंने अभी just definition में जो लिखा था important point, that all natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural number. तो यहाँ पे क्या दिया है? all whole numbers are natural numbers, so it will go as false. So F1 is false. Now next, the predecessor of 2-digit number is never a single digit number. मतलब 2 digit कोई भी नंबर ले लो 2 डिजिट वाला, उसका जो प्रीडिसेसर है वो कभी भी सिंगल डिजिट नहीं हो सकता है, ऐसा स्टेटमेंट में दिया है. लेकिन अगर आप देखो, इफ़ यू टेक एन एग्जांपल लाइक 10 इज अ 2 डिजिट नंबर. अब उसका प्रीडिसेसर जब आप लिखोगे सो इट इज 9. ओके, द प्रीडिसेसर ऑफ 10 is 9 and 10 is a 2-digit number, तो उसका predecessor आया that is single digit number. So here the statement में क्या दिया है that the predecessor of 2-digit number is never, कभी भी single digit नहीं हो सकता, तो single digit हो सकता है. So again the statement goes false. Then next one is the smallest whole number. जस्ट फ्यू मिनट्स बैक ओनली मैंने आपको बताया था दैट
whole number starts from 0, 1 2 3 and it goes on. तो smallest whole number क्या हो जाएगा 0, but here it is given 1. That's why again the statement goes wrong. Then the natural number 1 it has no predecessor, means natural number start कहाँ से होता है? The natural number starts from 1 2 3 4 5 and it goes on. Start यहाँ से होता है तो उसका predecessor कहाँ पे होगा? It will be not having any predecessor. वन नेचुरल नंबर में वन का predecessor कोई भी नहीं होगा. तो यहाँ पे क्या दिया है? द नेचुरल नंबर वन हैज़ नो predecessor, so it is true. वो ट्रू है. वन का predecessor नेचुरल नंबर में कोई भी नहीं होगा. अगर होल नंबर का बोला होता तो वन का predecessor क्या हो जाता? 0, क्योंकि होल नंबर का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 0 से. लेकिन नेचुरल नंबर में स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 1 से होता है. तो 1 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है. सो दैट द स्टेटमेंट गोज ट्रू. देन द नेक्स्ट वन, द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर. होल नंबर 1, ये होल नंबर है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 एंड इट गोज ऑन. तो यहाँ पे क्या बोला है? द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर. होल नंबर जो 1 है उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है, लेकिन वन होल नंबर में 1 का प्रीडिसेसर है. वो कौन है? 0 है. इट इज 0 होता है. दैट्स वाई इट विल गो फॉल्स. अगर नेचुरल नंबर में बोला होता कि 1 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है, देन वी कैन से दैट इट इज ट्रू. लेकिन होल नंबर में तो 1 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा? 0. 1 minus 1 आप करोगे तो क्या आ जाता है? 0. So 0 is being there, so the statement goes false. Then comes K. The whole number 13 lies between 11 and 12. ये जो whole number है 13, whole number कौन सा है? 13. और वो किसके बीच में आ रहा है? 11 और 12. हाउ इट इज़ पॉसिबल? 11 आता है, उसके बाद 12 आता है, एंड देन इट कम्स 13. तो 13 11 और 12 के बीच में तो आ ही नहीं सकता है. सो ऑब्वियसली द स्टेटमेंट विल गो फॉल्स. अगर ऐसे बोला होता दैट द होल नंबर 12 लाइज बिटवीन 11 एंड 13, तो हम मान लेते कि भाई 11 और 13 के बीच में आता है 12. लेकिन 13 तो 12 के बाद आता है, तो 11 और 12 के बीच में तो आने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं. L, द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर. जो होल नंबर 0 है उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है. होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारा 0 से. अब उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होगा. जैसे 1 में 1 का नेचुरल नंबर में 1 का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, वैसे होल नंबर में 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है. सो इट इज ट्रू. ओके, द लास्ट वन, दैट इज M. द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर. मतलब कोई भी 2 डिजिट का नंबर होगा, उसका जो सक्सेसर मीन्स उसके बाद जो नंबर्स आएगा मीन्स उसका सक्सेसर वो हमेशा 2 डिजिट ही होगा. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. इफ़ यू टेक 99 इज़ अ 2 डिजिट नंबर, उसका जो सक्सेसर होगा दैट विल बी 100 एंड 100 इज़ अ 3 डिजिट नंबर. यहाँ पे क्या बोला है? वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं वो खास देखना है. द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज, हमेशा 2 डिजिट नंबर ही होगा. 2 डिजिट का सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट नंबर ही होगा. इज रॉन्ग, क्योंकि 2 डिजिट नंबर मैंने आपको लिख के भी पता, इट इज़ 99 इज़ अ 2 डिजिट नंबर और उसका सक्सेसर 100 हो रहा है एंड दैट इट कम्स एज अ 3 डिजिट नंबर. सो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है ऑलवेज अकॉर्डिंग टू दैट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो इट विल बी false. So student, this was your exercise 2.1. Here we finish. You have to write each statement and then you will write false, then true if it is true, false. As I am just explaining, that's why I've written in this manner. लेकिन आपको क्वेश्चन भी लिखना है और फिर false है या true है, that you have to write down. So by here we finish the first exercise 2.1.
1. In the next video, we'll learn about the properties of whole numbers. So till then, thank you and take care.